जाना कम से कम भरना पड़े। आम आदमी के बजट को लेकर के ब्रह्मे साहब आपका क्या अनुमान है? आम आदमी के बजट की जब बात करते हैं तो इसका मतलब सीधा ऐसा लगता है कि कुछ जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उन पे क्या इन्हांसमेंट होने वाला है। एक चीज ये है, आम आदमी की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें आप स्वास्थ्य को लेकर, उसको शिक्षा को लेकर उसमें क्या प्रावधान कर रहे हैं या उसको कुछ बढ़ा रहे हैं या नहीं, जो कि बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जो है आम आदमी की यदि बात करते हैं तो मैं किसानों को भी उसी में रखना चाहूँगा, आम आदमी में, या महिलाओं को, तो उनके लिए कुछ प्रोविजन होंगे। क्योंकि मैंने बताया मिडिल क्लास तो एक अलग वर्ग है जिसके लिए ज़रूर इसमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा जो स्लो डाउन आया है वो मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट के कारण आया। जो 7% मैन्युफैक्चरिंग थी वो कम होकर 2.2% हो गई। और इवन अभी जो CII है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो औद्योगिक संगठनों का समूह है, उसने तो यहाँ तक रिकमेंड कर दिया था कि आप जो है ये जो वाउचर्स बांटे जिससे कि डिमांड कुछ बढ़े। तो ये सारी, चलिए सीधे आपको संसद भवन परिसर लिए चलते हैं, सीधे आपको सदन के भीतर लिए चलते हैं। वित्त मंत्री जी पहुंच गई हैं, बजट भाषण की शुरुआत होने को है। मेरा नाम बैग रखा है बाहर। अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span
10 broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Details are in Annexure B.
Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks 2nd largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization.
This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The Alternate Investment Fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India
a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014
to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay.
The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational
and Northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, Swami, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative.
In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germ plasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector
will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings
is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth.
domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts
and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax
at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility.
I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%,
and above 24 lakh rupees, 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शुरू। और लीजिए साहब, बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसका इंतजार था, जो कहा जा रहा था कि मिडिल क्लास का बजट होगा। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी घोषणा, नौकरी पेशा के लिए सबसे बड़ा ऐलान। बजट 2025 में बिहार का चुनाव, इसका इम्पैक्ट दिखा। मिडिल क्लास का दबदबा ये दिखाई पड़ा। और मिडिल क्लास को लेकर सबसे बड़ी घोषणाएं आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। मिडिल क्लास के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 1 लाख महीने की सैलरी वालों पर कोई टैक्स सरकार ने निर्धारित नहीं किया। 12 लाख तक आय वालों को 80,000 और 12 से 16 लाख आय वर्ग पर 15% टैक्स लगाया है। तो 12 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं है। नया टैक्स रिजीम जो है उसको आप अच्छी तरह से समझें। जो सुधार किए गए हैं, इसमें कुछ बड़ी बातें भी कही गई। अगले हफ्ते एक नया आयकर बिल भी आने वाला है, इसकी भी घोषणा सदन में आज वित्त मंत्री जी ने की है। सबसे बड़े ऐलान इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ में सबसे बड़ी चूंकि जिज्ञासा टैक्स को लेकर थी, शशिकांत चंद्राकर जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लगातार बने हुए हैं। शशिकांत जी, समझाइए थोड़ा।
जिस तरीके से अभी जो प्रेजेंट टैक्स प्रपोजल अभी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने रखा है, तो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से कल जो माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी जो बातें जिक्र हो रही थी, मध्यम वर्ग टैक्स पेयर के बारे में बातें हो रही थी, तो अनुमान तो वहीं से लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज होगा, पब्लिक को फायदा देने की कोशिश होगी, और उसी के अनुरूप ये जो फायदा देने की प्रयास की गई है, टैक्स में छूट देने की प्रयास की गई है। लेकिन वह ये जो चेंज जो आया है वो आपके न्यू रेजाइम में जो टैक्स पेयर होंगे उनके लिए आया है। अगर कोई ओल्ड स्कीम में जाना चाहता है तो उसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो रेट अब टैक्स। तो ये तो साफ दिख रहा है कि नए टैक्स रिजीम को प्रमोट करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे देश में एक जैसी ही आप सिस्टम को लग पाए, लेकिन चॉइस देनी पड़ेगी, तो चॉइस दी है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप नया टैक्स रिजीम चुनते हैं तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, थोड़ा इसको क्लियर कीजिएगा, समझाइएगा। दर्शकों को बता दें कि नए टैक्स रिजीम के लिए ही ये सारे नए प्रावधान या छूट की बातें, या 12 लाख तक की इनकम को टैक्स से अलग रखा गया है, इसके बारे में बताइए। नए टैक्स रेजिम में पहले जो आपके कोई छूट जो मिलते थे, 80C के छूट मिलते थे, और जो हाउसिंग लोन के ब्याज के जो छूट मिलते थे, वो सारी छूट तो न्यू रेजिम में आपको नहीं मिलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉय के केस में मिलना है। उसके अलावा आपके जो स्लेब को चेंज करके, और स्लेब को चेंज करके आपके रेट ऑफ टैक्स को रिड्यूस करके आपकी टैक्स बर्डन को कम करने की कोशिश की गई है। और 87A सेक्शन 87A की जो डिडक्शन है, जिसकी जो 7 लाख के इनकम ग्रुप तक के लागू हो रही थी, अब उसको 12 लाख के इनकम ग्रुप तक के वो 87A की छूट आपको दी जाएगी, जिसके कारण ये बोला जा रहा है कि 12 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 12 लाख से ऊपर के स्लेब में जाते हैं तो जो छूट है 87A वाली वो आपको नहीं मिलेगी, और पूरे इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो आगे भी बताया गया है 12 से 16 वाला, 16 से 20 वाला, थोड़ा इसको भी क्लियर कीजिएगा। वो कितना आय वर्ग है उसके हिसाब से, मतलब 12 लाख से ऊपर के जो आय वर्ग है उनके 12 से 16 लाख के ऊपर जो एक स्लेब बनाया है वो तो आगे जैसे चल रहे थे पहले वैसे ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 12 लाख से ऊपर के इनकम ग्रुप में चले जाते हैं तो जो वो छूट जो बोल रहे हैं 12 लाख तक के वाला, वो छूट आपको अप्राप्त रहेगी, वो उस टैक्स को भी आपको देना पड़ेगा। तो आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जैसा बता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि नया टैक्स रिजीम 2025-26 के लिए जो आया, इसमें 12 लाख तक की इनकम टैक्स से अलग रखी गई है। 12 लाख से 15 लाख तक 15% के हिसाब से आपको टैक्स इसमें देना पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके आगे 15 लाख से 20 लाख तक की जिनकी इनकम है उन्हें 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, और ये बताया जा रहा है कि 25 लाख से ऊपर वाले उन्हें 30% देना पड़ेगा। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं टैक्स स्लैब, मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत, 12 लाख तक कोई कर नहीं, 12 लाख से 16 लाख तक की जो आय है उस पर 15%, 16 से 20 लाख तक की जिनकी आय उन्हें 20, और 20 लाख से 24 लाख के बीच 25%। तो ये सबसे बड़ा ऐलान। और उसमें भी अगर आप सैलरीड इनकम रखते हैं, यदि आप मिडिल क्लास में एक सैलरी उपभोक्ता हैं, मतलब जो कर्मचारियों की सबसे बड़ी कलम डिमांड देख रहे थे कि सरकार से वो चाहते हैं कि उनको कम से कम टीडीएस में राहत मिले, कम से कम उन्हें टैक्स में राहत मिले, आप क्या मानते हैं, ये राहत उनको मिल गई है? थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा पुनीत जी। एक्चुअली क्या है कि जो स्लेब है न्यू रेजाइम में टैक्स की जो स्लेब है, 0 से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, और 8 लाख से 10 लाख वो भी है। हाँ। लेकिन उसके अलावा क्या उस पे 5%, 12% अलग अलग स्लेब में टैक्स है, रेट है। लेकिन आपको 12 लाख तक के अगर आपका सीमित है आपका इनकम, तो आपको 87A की छूट देके आपके टैक्स को माफ किया जाएगा, मतलब इसीलिए वो नील टैक्स हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही 12 लाख को और समझाइए, आम लोग जो हमको देख रहे हैं, अगर कोई सैलरी क्लास का इनकम वर्ग है और वो सैलरी से इनकम लेता है 12 लाख तक की, तो उसे कितना कर देना? नहीं, उसको कोई कर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 87A की छूट में वो पूरा का पूरा जो भी टैक्स बन रहा है 5% और 12% वाला, वो भी आपको छूट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 12 लाख के इनकम से ऊपर जाते हैं, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख में जाते हैं, तो ये जो 12 लाख तक के जो टैक्स आपकी छूट हो रही है, वो छूट आपको नहीं मिलने वाली है, वो टैक्स आपकी जुड़ जाएगी।
ठीक है, और फिर उसमें जो टैक्स है वो किस हिसाब से दिया जाएगा? वो जो पूरी स्लैब वही चलेगी। आपको स्पेशल 87A की छूट दी जा रही है अगर 12 लाख तक के इनकम है तो। और इसमें जो एक बड़ा ऐलान हुआ है कि हम एक नया टैक्स को लेकर बिल लेकर आ रहे हैं, इसमें फिर क्या बातें हैं? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो दिए गए हैं, क्या इनका वैलिडेशन उसमें होने वाला है? ये वही होगा जो आज प्रस्तावित दिया है, या फिर इसमें आप कुछ और नई बातें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये कह पाना अभी हमारे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड एक सेपरेट इनकम टैक्स एक कानून बन के आ रहा है। हाँ, तो उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं वो तो बिल पेश होने के बाद ही हमको पता चल पाएगा। तो इसका और उसका क्या रिलेवेंस है अभी कह पाना मुश्किल है। सत्यवर्धन तिवारी जी, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, बहुत ही बाजार के ऊपर बारीकी से नजर रख रहे थे हर एक क्षण जब बजट में कोई बड़ा ऐलान हो रहा था। आपकी क्या राय है? और स्पेशली टैक्स से भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स में रिबेट से, राहत से ही आपको निवेश का मौका मिल पाएगा। देखिए, मैं शुरू से जब हम आप साथ में बैठे तो मैं मिडिल क्लास कह रहा था, और ये बहुत बड़ा एक सौगात मिला है मिडिल क्लास को। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसको छोटे से कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करिए। अगर 12 लाख के रेंज पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज 80,000 के आसपास सालाना आपकी बचत हो रही है। वो 80,000 रुपए अगर आप मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स पे करे चाहे शेयर पे करे, ठीक ठाक, मतलब मैं कह रहा हूं रिस्क ना लेके ठीक ठाक पे करे, तो 10 से 12% की आपकी पैसिव इनकम होगी। वो लगभग 8 से 9,500 के आसपास, मतलब जो 80,000 रुपए बच रहा है, उस बचे पैसे को सही तरीके से अगर आप निवेश करते हैं तो 8 से 9,000 9,500 रुपए और आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। बहुत बड़ी राहत है, और इससे मुझे लगता है जो मार्केट बीच में थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड था, मार्केट थोड़ा सा निराश हो रहा था, वो अचानक से मुस्कुराने लग गया। बिल्कुल, और मार्केट देखिएगा आप लगातार अप जा रहा है। जो बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब वो चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट ने वेलकम किया इन सारी घोषणाओं का। सबसे बड़ी बात यह, मार्केट तब खुश होगा जब इन्वेस्टमेंट आएगा। अब आपको लगता है कि सैलरीड क्लास के पास ज्यादा मौका है निवेश करने का, क्योंकि बचत होगी, तो वो तो चाहता ही था तिवारी जी कि निवेश करें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, अभी जो हमारा रिसर्च कर रहा है, जो अभी मिडिल क्लास है रिसर्च कर रहा है, मिडिल क्लास अब क्या सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट्स की ओर मूव कर रहा है। इस दौरान जब सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट की ओर मूव कर रहा है, सेविंग्स मतलब एफडी की भी बात करें तो 7% के आसपास की कमाई होती थी, वो अब सीधे अगर ढंग के इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा तो 12 से 15% की कमाई होगी। शुद्ध पैसा है, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, और जो बचत है वो बचत कहां जाएगा? या तो वो मार्केट में वापस से जाएगा चीजें खरीदने के लिए, और एक समझदार मिडिल क्लास का बंदा होगा तो जो सेविंग्स या तो कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, या फिर आप निवेश में उसको डालेंगे। दोनों ही ओवरऑल स्थिति में देश में ही निवेश उसका होना है, देश में ही होना है। और ओवरऑल ये पूरा का पूरा मार्केट इनडायरेक्टली जो है, पूरा का पूरा बजट इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करने जा रहा है। ठीक है, यहां जिस तरीके से चंद्राकर साहब आपने बताया कि ये न्यू रिजीम को लेकर सारी बातें हैं, लेकिन इस न्यू रिजीम में 1, 2, 3 पॉइंट्स ऐसे भी सामने आए हैं कि जिसको हमको लगता है कि निवेश की तरफ आपको ले जाएंगे। आपको लगता है कि इसमें बचत का बढ़ावा होने वाला है, लेकिन नए और पुराने में जो अभी पिछले 2-3 साल से कंफ्यूजन चला रहा था, शायद अब बिल्कुल क्लैरिटी है। सबके सब न्यू रिजीम की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि इसमें सीधा एक स्लैब दिख रहा है 0 to 12 लाख का। सर, इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, इसमें मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि थॉट प्रोसेस का अंतर है। ओल्ड रिजाइम में लोग 80C की छूट पाने के लिए, इनकम टैक्स की छूट पाने के लिए इन्वेस्ट करते थे। ठीक बात है, वो उनकी मजबूरी थी कि उनको उतना टैक्स बचाना है, इसलिए उसको इन्वेस्ट करना है। लेकिन इस बार आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको छूट नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पैसे ही ज्यादा बचा दे रहा है। और अगर आपका पैसा ही बच रहा है, जब आपके पास हाथ में हैंडसम मनी आपके पास अवेलेबल है, तो फिर कहीं ना कहीं आप उसको जो ये मान्यता थी पिछले 3 सालों में कि अगर आप निवेश करके बैठे हैं, अगर आप लोन लेकर बैठे हैं, तो आपको ओल्ड रिजीम में कई ब्रैकेट्स में इसमें छूट मिला करती थी, इसीलिए आप 2 ऑप्शंस में चुना करते थे। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि क्लैरिटी आ गई है इस साल 2025 में कि अब आप न्यू रिजीम की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आपको जो छूट के ब्रैकेट हैं उसमें ओवरऑल बचत मिल रही सीधे 12 लाख तक? जैसा अभी जो ब्रैकेट को चेंज किया गया, 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 15, जो स्लेब रेट को रिड्यूस किया गया है, तो इसको देख के तो अब ये क्लियर कट समझ में आने लग गया है कि ओल्ड रिजाइम में अगर जिसको 8-10 लाख से ऊपर की जिसकी इनकम हो रही हो, 12 लाख तक की जिनकी इनकम हो रही हो, उनको मतलब ओल्ड रिजाइम में जाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है।
अभी मोटा मोटा देख के यही समझ में आया था। अभी तक कैसा लगता था कि हमको पैरेलल कैलकुलेट करना पड़ता था कि ओल्ड में कितना टैक्स बन रहा है, न्यू में कितना बन रहा है। ठीक है, हमारे साथ में डॉक्टर मनिंदर सिंह सलूजा साहब अगर जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट इंदौर से, तो जरा आप देखें। जी जी बिल्कुल दिखाई पड़े हैं। मनिंदर जी आप अपनी बात रखिए, थोड़ा क्लियर कीजिएगा, ये नए और पुराने वाला जो चक्कर है इसके बारे में भी थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा। सर, जैसे आपसे प्री बजट चर्चा में मैंने कहा था कि सरकार ने पिछले कई सालों से ही संकेत दिए हुए हैं कि वो चाहती है कि सभी देशवासी न्यू टैक्स रेजिम की तरफ बढ़े, और इस बार भी उन्होंने जितने भी प्रस्ताव किए, जो भी चेंजेस किए, वो न्यू टैक्स रेजिम में किए, ना कि ओल्ड टैक्स रेजिम में। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली होगी, यदि आप आंकड़ा देखें तो अभी तक ज्यादातर टैक्स पेयर्स, मेजोरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स ओल्ड टैक्स रेजिम में थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये चेंजेस करके उन सब लोगों को न्यू टैक्स रेजिम की तरफ मूव करने के लिए प्रोत्साहित किया है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी समझने की जरूरत है कि पूरा का पूरा पैसा बाजार में जाएगा या पूरा का पूरा पैसा कंजम्पशन में जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई, खासकर जैसे कि कल के इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि जो बेसिक आइटम्स हैं, खासकर टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, टॉप जिसे बोलते हैं, या सीरियल्स और पल्सेस, इनमें ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैसे की कुछ बचत हुई है मिडिल क्लास के हाथ में, वो कहीं ना कहीं उनकी कंजम्पशन की नीड्स को पूरा करने में जाएगी। सरकार को लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए थी, जब सरकार न्यू टैक्स रेजिम की तरफ सबको आकर्षित कर रही है। पुरानी रेजिम में आप मेडिक्लेम में छूट देते थे, आप हाउसिंग सेक्टर की छूट देते थे। एग्जैक्टली। हमारे देश में अभी भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 1 से 2% ही है, वो भी अगर हम ओवरऑल देखें, रूरल अर्बन अलग कर दें तो रूरल एरिया में ना के बराबर है। हमें कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ावा देने की जरूरत थी। अगर सरकार जो कदम उन्होंने उठाया न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब्स बढ़ाने का, ये काबिल तारीफ है, लेकिन यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में भी साथ में कुछ चेंजेस लाते, कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटी सेक्टर थे, खासकर जब हम हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं या इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने की बात करते हैं, उसके लिए यदि कुछ प्रोविजंस किए होते, उन्होंने ओल्ड टैक्स रेजिम को भी कुछ हद तक इसमें पैरेलल सपोर्ट देते, तो शायद मुझे ऐसा लगता है लेकिन ये आप ही की बात में फिर कोट करूंगा, जैसा आपने खुद कहा कि सरकार तो चाहती है कि सबके सब नए टैक्स रिजीम की तरफ जाएं। एक बात और क्लैरिटी आप दोनों से मैं पूछूंगा, जो आप दोनों सीए साहब बैठे हुए हैं यहां भी और आप भी, मैं दोनों से पूछूंगा कि दरअसल इसमें आप कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि 12 लाख तक की जो भी आपकी इनकम है वो टैक्स से अलग या टैक्स से मुक्त निल इस तरीके से हुई है कि इसमें भले ही 0 to 4 और 4 to 8 और 8 to 12 के ब्रैकेट दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी टैक्स बनेगा उस पर जो छूट गवर्नमेंट ने दी हुई है वो उसको पूरी तरह से निल कर देगी। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? यही स्थिति है, बताइए चंद्राकर जी। 80 देखिए जी आप ही इस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, सलूजा जी। पेट देंगे जी, यहाँ पे 87A में रिबेट मिलेगी, ना कि कोई टैक्स की छूट। देखिए न्यू टैक्स रेजिम में ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा उन्होंने डिडक्शन का कोई भी एवेन्यू नहीं रखा है। यदि आप 12 लाख तक ले रहे हैं तो टैक्स कैलकुलेशन में आखिरी में जब 87A पे कैलकुलेशन आएगा, वो आपकी इनकम टैक्स को बाय डिफॉल्ट 0 कर देगा, आपका इनकम टैक्स पेबल दिखा के उसे 0 कर देगा। लेकिन जैसे ही आप 12 लाख 1 रुपए पर आए, आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि स्लैब्स के हिसाब से 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 की रेंज में आ रहा है। ठीक बात है, तो ये क्लैरिटी आप रखिएगा कि नई टैक्स रिजीम जो है आपको 12 लाख रुपए तक की जो आय है, और स्पेशली अगर आप सैलरीड हैं तो इस पर आपको कोई भी कर नहीं देना है। लेकिन अगर आप 12 लाख से 1 रुपए भी अधिक होते हैं तो किस हिसाब से आपको कर देना है, उसके लिए आपको ये पूरी टैली दिखाई पड़ रही है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें अलग अलग ब्रैकेट्स बनाए गए हैं कि 0 से 4 लाख तक आप कर मुक्त रहेंगे, 4 से 8 लाख तक, 12 लाख 1 अगर आपकी है तो आपको 5% के हिसाब से, अगर 8 से 12 है तो 10% के हिसाब से, और 12 से 16 है 15% के हिसाब से आपको, और आगे सो ऑन जो आपका चल रहा है वैसे आपको टैक्स देना होगा। यही ठीक व्यवस्था है जो हम बता रहे हैं चंद्राकर जी? बिल्कुल यही चीज मैं आपको शुरू से समझाने की कोशिश प्रयास कर रहा था जी, कि वो 4 से 8 और 8 से 10, 12 ये जो स्लेब जो बनाया गया है, हाँ। उसमें अगर आपकी इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12 लाख के अंदर
अंदर है या 12 लाख तक है तो आपको 87A की छूट मिलेगी, जिसके वजह से आपका टैक्स बर्डन 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 12 लाख से ऊपर जाते हैं तो जो पूरा जो छूट वाली क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, रिबेट जो खत्म हो जाएगी और आपको पूरे का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अजय साहू जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता नए ज्वाइन किए हुए हैं इस पैनल को, बाकी सब हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। थोड़ी देर बाद आपसे इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी लूंगा, लेकिन बहुत देर से रविंद्र ब्रह्मेश साहब, अब जरा आपने चूंकि टैक्स को लेकर सर्वाधिक चर्चा होती, जिज्ञासा होती रविंद्र जी, तो हमने बहुत बात कर ली, आप भी चाहें तो टैक्स पर बात रख सकते हैं एक, और बिहार पर ये जो न्यौछावर किए चुन चुन के जो 4-5 चीजें तो मैं ही इसमें अलग से नोट डाउन कर पाया हूं कि क्या क्या आप बिहार को देने जा रहे हैं, तो ये हमारी बात एकदम सही निकली। मखाना बोर्ड बिहार में, IIT पटना विस्तार वित्तीय सहायता बिहार में, पश्चिम कोसी नहर परियोजना वित्तीय मदद बिहार में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, 3 एयरपोर्ट्स, ये सब के सब बिहार में। इसके अलावा और क्या हाईलाइट्स आपको लगे, लेकिन बहुत क्लैरिटी से संक्षेप में आसान शब्दों में बताइएगा। जी हाँ पुनीत जी, देखिए आपने जो 10:58 पे जस्ट दो प्रायोरिटी मुझसे मांगी थी, हाँ, और मैंने 2 बात कही थी बजट के लिए। एक बात कही थी कि यहाँ पे जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है और खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट दिया जाएगा, यहाँ पर खास कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था यदि आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहते हैं। एक और दूसरी बात मैंने कही थी कि जो टैक्स में एक बड़ा छूट मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो पूरा बजट यदि आप देखेंगे तो इन दोनों चीज़ों के आसपास घूम रहा है। और जो कि पहली जो बात खासकर एक जो एग्रीकल्चर पे उन्होंने छूट की घोषणा की है, किसान क्रेडिट कार्ड को 5 लाख तक बढ़ा दिया है, और एक जो नई स्कीम अभी घोषणा हुई है उसकी, है ना। तो इसके अलावा जो है ये पूरा यदि बजट है तो आपका किस प्रकार से देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, MSME को सेक्टर के योगदान की चर्चा बहुत फाइनेंस मिनिस्टर कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी समय से, मैं तो कहूँगा कि जो है पिछले 75 सालों से जो हमारा MSME का कंट्रीब्यूशन है GDP में वो 15-17% के बीच में है, और जो हमारी पॉलिसी है कि कोई भी देश विकास नहीं कर सकता यदि मैन्युफैक्चरिंग 25% पे ना आए। गवर्नमेंट इसको 25% पे ले जाना चाह रही है GDP का, और इसीलिए सारे जो उपाय हो रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, रिफॉर्म की बहुत बात की गई, जितने रिफॉर्म हो रहे हैं और जितना इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने की बात की जा रही है, ये सारे इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे कस्टम ड्यूटी में छूट देने की बात की जा रही हो, ये सारी चीजें बजट की इसके चारों ओर घूम रही हैं कि किस प्रकार से देश में हम निर्माण, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको कैसे हम बूस्ट करें, उसको कैसे उत्पादन उसका बढ़ाएं। और दूसरी तरफ साथ ही साथ जब आप उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आपको मांग भी क्रिएट करनी पड़ेगी, और मांग क्रिएट करने के लिए आपको टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ेगा। तो इन 2 चीजों के चारों ओर ये बजट मुझे घूमता हुआ दिखा। जी, हमारे साथ में कुछ नए गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। एक तो मुझे वहां यशपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़े दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं उनको। और साथ में कैलाश खेमानी साहब हैं, प्रेसिडेंट RADA रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के। कैलाश खेमानी सर को भी मेरा नमस्कार है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैलाश जी, आपको कैसा लग रहा है बजट, इंडस्ट्री फ्रेंडली या आप सेक्टर वाइज फ्रेंडली से पाते हैं? थैंक यू पुनीत जी। हमारा बहुत पहले से बजट तो बहुत शानदार दिया है, पर हमारी बहुत पहले से मांग थी कि ऑटोमोबाइल में कुछ छूट मिले, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात कर रहे हैं हमेशा। हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री पर EV पर मुझे लगता है EV पर ज्यादा फोकस है सरकार का, चाहे बैटरीज के सेक्टर में हो या EV व्हीकल्स के लिए हो, उनके कलपुर्जों को लेकर के हो, ज्यादातर घोषणाएं उस सेक्टर में, क्योंकि वो भविष्य फ्यूचरिस्टिक है। पर आज भी जो सबसे ज्यादा गाड़ी बिकती है, हमारी डिमांड जो थी 2 व्हीलर के लिए 28% आज भी टैक्स है। हमने 18% की डिमांड रखी हुई थी गवर्नमेंट से। जैसे भाई साहब ने बोला, मैन्युफैक्चरिंग पे इनका फोकस है, पर आज भी 2 व्हीलर हो गया या 4 व्हीलर हो गया, हिंदुस्तान में उतना नहीं है जितना चाइना वगैरह में है। तो हमारी डिमांड थी अगर कुछ रेट में कुछ कटौती होती है, टैक्स में 28% है जो लग्जरी टैक्स है, पर आज की डेट में 2 व्हीलर लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। तो हमने चाहा 18% हो जाए, जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी। वैसे भी आजकल गाड़ियों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो हमारी डिमांड थी कि वो कम होगा रेट तो शायद मार्केट को बूस्ट मिलेगा।
ठीक है। 4 व्हीलर में भी बहुत टैक्स है हमारे। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि ईवी पर तो ध्यान दिया, लेकिन अभी जो चलन में व्हीकल्स हैं उन पर अगर थोड़ा रियायत देते तो ज्यादा बेटर स्थितियां बन पाती हैं। लेकिन आप एक उम्मीद ये कर सकते हैं कि लोगों के पास में अगर क्रय शक्ति बढ़ रही है या बचत बढ़ रही है तो संभवतः शायद वे अपने लिए व्हीकल्स भी खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो सबके सब ईवी नहीं खरीदेंगे, जो चलन में उसकी तरफ भी जाएंगे। एक अच्छा संकेत। वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार वत्सल, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ एक बिजनेस पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी को नमस्कार करता हूं मैं। सत्य प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, रिएक्शन चाहूंगा आपका। हेलो, यस सुमित जी। जी सत्य प्रकाश जी, कैसा है बजट आपके लिहाज से? देखिए, इस बजट में जो मिडिल क्लास की चर्चा यहां चल रही है, टैक्स स्लैब में एक बढ़ोतरी दी है, इसके मुझे 2 रीजन दिखाई देते हैं। हाँ जी। देखिए, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 12 लाख के ऊपर वो भी 5%, 10% और फिर आगे बढ़ाया है। इससे ना केवल मिडिल क्लास को एक राहत दी है, बल्कि स्टार्टअप्स की तरफ या एमएसएमई में जो बिल्कुल छोटे सूक्ष्म उद्योग हैं, उन लोगों को भी एक बड़ी राहत की तरफ यह कदम दिखता है। यानी कि इसका मतलब है कि सरकार का फोकस एमएसएमई और कहीं ना कहीं स्टार्टअप की तरफ है, एक चीज। लेकिन इसका पॉलिटिकल मीनिंग देखिए, आप जानते हैं कि आने वाले समय में मेजर पॉलिटिकल रीजन या मेजर पॉलिटिकल स्टेट बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शंस होंगे, और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं तो सत्य प्रकाश जी, ये नीतीश कुमार की डिमांड आपको दिखाई पड़ती है, या ये इंडिविजुअली अपने आप को वहां एक लाइन ऊपर लाने की कोशिश दिखाई पड़ती है बिहार में? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से उसने महाराष्ट्र में 90% से ओवर स्ट्राइक रेट दिखाया है जी, यही रिपीट बिहार में हो। ये नीतीश की डिमांड हो सकती है, लेकिन मेजर जो आपको मूव दिख रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ महाराष्ट्र की तरह अपने वोट को खींचने का एक बड़ा प्रयास है, जिससे कि वहां पर इंडिपेंडेंसी खत्म हो। ठीक बात है, तो ये इंडिपेंडेंस खत्म होगी ऐसी कोशिश की गई है। हालांकि कैलाश जी यहां ये कह रहे हैं बाजार से कि उनको ये उम्मीद थी कि उनके सेक्टर के लिए थोड़ी छूट बढ़ती, थोड़ा रिबेट मिलती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन एक चीज मैं आगे बढ़ूं, पॉलिटिकल कमेंट की तरफ जा रहा हूं, और अभी यहां दोनों तरफ से प्रहार होंगे, बार पलटवार होंगे। लेकिन मैं यहां ब्रह्मे साहब से एक बात जानना चाहूंगा। ब्रह्मे साहब, अगर मूल आज की सबसे बड़ी घोषणाओं को आप देखें तो उन्होंने शुरुआत में 5 पॉइंट से ही वित्त मंत्री जी ने क्लियर किया था। एक, छत्तीसगढ़ कनेक्शन ज्ञान के आधार पर निकला है। इसमें गरीबों को, अन्नदाताओं को, महिलाओं को, इन सबको, उन्हीं फैक्टर्स को शामिल किया जो ज्ञान यहां से निकला था और महाकेंद्र तक ये पहुंच चुका है। इसमें जो 5वां पॉइंट था मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना, और तीसरा चौथा पॉइंट था निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना। आपको लगता है पर्याप्त स्कोप का इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ने, या अभी भी बचता है? देखिए, यदि ये तो 5 बातें जो आपने बताई थी वित्त मंत्री ने शुरू में कही थी, पहला कि, और हर बजट का ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि विकास को कैसे तीव्र गति से बढ़ाना है, तो ये पहला उनका पॉइंट था। हाँ। और दूसरा था कि भाई हम इसको जो विकास को कैसे इंक्लूसिव करें, तो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि समावेशी विकास बढ़ाएंगे। तीसरी बात उन्होंने शुरू में अपने बजट में कही थी कि हम निजी इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा, क्योंकि इस साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है तो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। पिछली बार 11 लाख करोड़ था, इस बार मुश्किल से 11,50,000 करोड़ है। मैं अभी पूरे बजट की फिगर देख रहा था, तो मार्जिनली इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का हो रहा है। तो सरकार को निजी निवेश को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। सरकार जब खर्च करेगी, निजी निवेश आएगा, उसको सुविधाएं देगी। ये 3rd पॉइंट जो आप चर्चा कर रहे थे। और चौथा ये था कि जो हमारे यहाँ जो मध्यम वर्ग है वो खर्च करे, उसको कैसे बढ़ाएं, और जो परिवार है उसमें भी जो है उसके भी जो भावनाएं हैं और उसमें भी उल्लास हो कैसे लाएं, उसके जीवन स्तर को कैसे बेहतर बनाएं।
इनके लिए उन्होंने पूरे 10 पॉइंट यहाँ पे कहे थे कि जो बजट हमारा है ये 10 बिंदुओं पे हमारा केंद्रित है। उसको आपने जो चाहे आप कहें कि कृषि से लेकर या फिर ग्रामीण संपन्नता के लिए दूसरा उन्होंने कहा था, फिर विनिर्माण को बढ़ाना, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो बजट है ये जो है पूरा आपका लगभग इस बार का जो बजट है, लास्ट ईयर का बजट जो था वो लगभग आपका यदि पूरा जो हमारा जो खर्च था जो हम कुल एक्सपेंडिचर कर रहे थे वो 48,000 करोड़ का 48 लाख करोड़ का एक छोटा सा पॉइंट पे आपसे और पूछना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले जवाहर सूरी शेट्टी साहब, डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी शिक्षाविद, जाने माने शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए, उनको नमस्कार करता हूं, बहुत स्वागत है सर। 25 का बजट आ गया और यहाँ बजट 2025 के हाइलाइट्स के ऊपर हम बात करें, थोड़ी देर बाद मैं आपके पास लौटता हूं। रविंद्र ब्रह्मे साहब, दो बातें अब की बार एग्रीकल्चर को लेकर बड़ी स्पेसिफिक बातें दिखी। एक तो दलहन में हर साल महंगी दालें, अभी हमने प्री बजट डिस्कशन किया था हमारे पैनल के साथ, उसमें भी दालों को और तेल को कोड किया था। दालों को लेकर 6 साल का एक टारगेट फिक्स किया। एक मखाना बोर्ड भले ही बिहार में है, उसकी चर्चा उस तरीके से, लेकिन उस पर, कॉटन पर, इन 3-4 चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसकी कोई खास वजह या इसका इंपैक्ट आप देखते हैं? हाँ, इसकी वजह यह है कि हम जो हमारे जो देश है खाद्यान्न में जरूर आत्मनिर्भर है, परंतु हम अभी भी बड़ी मात्रा में जो है ऑयल, जो तेल है, खाद्यान्न तेल है और दाल है, इनका हम इंपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में। और ये इवन हमारा जो कंजम्पशन जिस रेट से दालों का बढ़ रहा है, तेल का बढ़ रहा है, उस रेट से दाल और जो खाद्य तेल हैं उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। दिस इज वेरी अलार्मिंग स्टेज। गवर्नमेंट इस साल नहीं, पिछले साल भी दलहन या तिलहन और उसके पहले बजट देंगे, कंटिन्यूस गवर्नमेंट इस पे एम्फेसिस कर रही है कि किस प्रकार से ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, किस प्रकार से लोग इन खाद्य ये जो दलहन और तिलहन का उत्पादन करें, क्योंकि इस पे हमें बहुत ज्यादा जो फॉरेन जो हमारा करेंसी है उसको हमको खर्च करना पड़ा। बल्कि आज एक नया एस्पिरेशन हम कह सकते हैं दिखाई पड़ा है। उन्होंने कहा कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में फूड बास्केट बनकर उभरे, इसके लिए हमको काम करना है, और इसके कुछ की फैक्टर्स भी आज वित्त मंत्री जी ने इसमें कोट किए थे। थोड़ी देर बाद मैं आता हूं, डॉक्टर शेट्टी के पास चलूंगा। डॉक्टर शेट्टी, अब की बार हम शिक्षा को लेकर बहुत कुछ इसमें ढूंढ रहे थे, अपलिफ्टमेंट की बात थी, लेकिन स्किल की तरफ ही पूरा फोकस था, एआई टेक्नोलॉजी की तरफ पूरा फोकस था, स्किल में भी इंडस्ट्री फ्रेंडली लोगों की तरफ फोकस था। आपने क्या क्या और इसमें हाईलाइट किया होगा? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग टाइम में इंटरेस्टिंग बजट है, और क्योंकि भारत का युवा जो है वो हंसता है तो कुछ अच्छी चीजें इसमें दिख, जो है वो ना सिर्फ युवा पे पड़ेगा, उनके एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा, ऐसा दिखता है। पहला ये कि 6500 आईटी की सीटें जो जुड़ी गई हैं 2014 के बाद, फिर भारत के सरकार पर ज्यादा ग्रांट का लोड पड़ता है, तो उनको सक्षम बनाने के लिए जोड़ी गई है। इससे बच्चों को अवसर मिलेगा। एक से दूसरा एक दिखता है कि फीस जो है वो कम आने के चांसेस ज्यादा है, खास करके मेडिकल में, जैसे 1000 सीटें बढ़ाई गई है। हाँ, तो फीस अगर कम आता है मेडिकल सीट महंगी, एक दूसरा है निचले तबके पे। जी शेट्टी साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में ब्रेक हो रही है। मैं कोशिश करता हूं कि एक बार फिर से जब हम आपसे कनेक्ट करें तो आपकी आवाज प्रॉपर हम पूरी सुन पाए। बीच बीच में ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा देखिएगा। हम इसके बाद वापस आपसे कनेक्ट करते हैं, आपसे वापस जोड़ करके बात करेंगे। अजय जी, बाजार खुश है, टैक्स पेयर्स थोड़े से खुश हैं, और सही समय में, एक तो शेट्टी साहब कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग टाइम में इंटरेस्टिंग बजट सरकार लेकर आई है और अच्छी तरह समझती है पॉलिटिकली क्या राइट है, पर इसे 47 के विकसित भारत का बजट कहा जा रहा है। देखिए पुनीत जी, बाजार खुश नहीं है, बाजार तो नीचे जा रहा है, और जिस तरीके से आंकड़े पेश करने में वित्त मंत्री जी की जो महारत हासिल है, उन्होंने अपनी उसी महारत का एक नमूना यहां पर पेश करने का काम किया है। इस देश के जो बुजुर्गवार लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए कुछ नहीं है। ये जो बजट में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये जो एक सब्जबाग दिखाया जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपका जो टैक्स का पैसा है वो बच जाएगा, लेकिन महंगाई से किस तरीके से बचना है इसके बारे में कोई इस बजट में सोच नहीं दिखती है। 12 लाख तो आप बचा लोगे, उससे जो टैक्स का, उससे जो पैसा बचेगा वो कहीं ना कहीं आप दाल खरीदने में, चावल खरीदने में, गेहूं खरीदने में,
आलू प्याज जैसी छोटी छोटी जरूरतें जो है उसमें वो पैसा खत्म हो जाएगा। और जो ये बार बार ये जो केंद्र की सरकार केंद्र की सरकार जो बात बार बार कहती रही है कि हम जब राज्यों में चुनाव होते हैं पुनीत जी तो ये कहते हैं कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, लेकिन आज की इस बजट में ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिला। तो अजय जी ये बातें दिल से बोल रहे हैं कि ये बातें केवल पॉलिटिकली बोल रहे हैं? की जो सरकार है, ये केंद्र की जो सरकार है, ये इस देश के लोगों को आंकड़ों के मोहजाल में फंसा करके बांध करके ठगना चाहती है और इसी दिशा में एक पहला कदम है। सरकार में आने से पहले इन लोगों ने कहा था हर साल 5 करोड़ नौकरियां देंगे, मिली क्या? हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, आई क्या? जब वो सारी चीजें एक भ्रम निकला तो ये कहीं भी कतई भी ये सच नहीं हो सकता। 2047 की आप बात करते हैं, इनको जो जनादेश मिला है वो केवल 2028 तक का मिला है, तो ये 2047 के तक का रूपरेखा बनाने की बात कैसे करते हैं? आज रायपुर से प्रयागराज की जो टिकट है, एयर फेयर जो है महाकुंभ में जाने का, वो 20-20 हजार रुपए का है। केंद्र सरकार की मंशा नहीं है कि ऐसे जो रेट बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के ऊपर कोई एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए। और ये बात करते हैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाने की, इनकी मंशा कतई नहीं है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे। चलिए अच्छी बात है, ये जो स्वयं है ये पूंजीपतियों इसको बीजेपी अजय जी इसको बीजेपी कह सकती है कि देखिए आज अजय साहू जी भी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बात कर रहे हैं एयर ट्रैवल करने की, कुंभ में जाना भी चाहते हैं तो एयर ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन मैं 2-3 पॉइंट, आपने कहा युवाओं के लिए कुछ नहीं, एमएसएमई में उन्होंने लिमिट्स बढ़ाई हैं लोन की, एमएसएमई में दायरा बढ़ाया है, जो फंड है उसका दायरा बढ़ा दिया है, ट्रेनिंग पॉइंट्स उनके बढ़ा दिए हैं, आईआईटीज को एम्पावरमेंट करने की बात की, किसानों की बात आपने की तो उन्होंने किसानों में, मैंने अभी आपके सामने 3 सेक्टर बताए जिसमें दालों का सेक्शन है, कपास का सेक्शन है, बाकी के और अन्य जो पीछे कृषि में रहते थे। एमएसपी की गारंटी किसान बार बार मांग रहा है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं, ये बात आप इसमें कह सकते हैं। हजारों किसान जो है पुनीत जी वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। सरकार इसलिए है कि किसानों की दुख दर्द को समझे या इसलिए कि किसान जो है आत्महत्या करे और इनके मंत्री जो है ताली पीटे? तो मेरा ये कहना है कि सरकार को जनभावना के अनुरूप काम करना चाहिए। सरकार को इस देश की जनता ने चुन करके भेजा है। तो ये जनभावना के अनुरूप भी तो ऐसा लग रहा है कि, बल्कि अब की बार तो ऐसा लग रहा है कि जो जो जनभावना थी उसी का रिफ्लेक्शन इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। इस बजट में बिहार के इलेक्शन का रिफ्लेक्शन पुनीत जी दिखाई पड़ रहा है। करेक्ट है, ये बात मानते हैं। निश्चित तौर पर शुरू में जब वित्त मंत्री जी बोल रही थी तो ऐसा प्रतीत ही सिसोदिया जी जवाब दीजिएगा अजय जी की बातों का। तो बिहार का बजट है ऐसा लग रहा था। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, एक वक्त तो वहां सदन में भी हो गया कि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश भी है, अखिलेश यादव साहब ने बीच में टोका भी था। पुनीत जी, आपने अजय जी के सारे प्रश्नों का खंडन भी कर दिया है और उनको निरुत्तर भी कर दिया है। जो बात मुझे कहना थी पुनीत जी, आपने बिंदुवार उन बातों को रख दिया है एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में कि बजट कितना खूबसूरत आया है। पुनीत जी ने भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका निभाई, बधाई आपको। अजय जी बधाई आपको। आप जब अजय जी को कहने का मौका मिल गया है। एक शब्द नहीं बोला हूं मैं, एक शब्द नहीं बोला। जी कहिए। नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं होना। GYAN, जी से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी शक्ति। ये बजट का पूरा फोकस है पुनीत जी। और जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो बजट के ठीक एक दिन पहले जब आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत होती पटल पर लोकसभा में, तब सोनिया गांधी जी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में, वाड्रा की मौजूदगी में और राहुल गांधी की मौजूदगी में देश की यशस्वी राष्ट्रपति महोदया का अपमान करते हैं और उनको जिस प्रकार से भद्दे शब्दों में बोलते हैं, क्या नारी सम्मान करेंगे? 2 नारी खड़ी थी उस समय, सोनिया गांधी स्वयं का वक्तव्य था और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़ी थी और मुख्य दर्शक बनकर राहुल जी देख रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है पुनीत जी। और जब हम कहते हैं वो करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का किसान क्रेडिट कार्ड आज 3 लाख से बढ़कर के 5 लाख तक पहुंच गया है। हम तो जानना चाहेंगे कि मनमोहन सिंह की सरकार में 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री ने किसान क्रेडिट का जो रेशो था, जो रेट था, जो सुविधा थी, उसको बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? मेडिकल के क्षेत्र में आने वाले 5 वर्षों में 75,000 सीटें देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स की बात कही गई नहीं देने की। टीडीएस की क्षमता बढ़ाने की बात करी है, किस प्रकार से इनकम टैक्स उसको रिबेट दी, टीडीएस की बढ़ाने के बाद 10 लाख तक की गई है। सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में पुनीत जी 2 गुना वृद्धि की गई है। और
और देखिए जिस प्रकार से कल का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था, मैं उस ओर भी जाना चाहता हूं, इसलिए कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट के पहले का एक दर्पण होता है। ट्रेड नेटवर्क, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, महंगाई के दर को कम करने के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, वाहन खरीदने के मामले को लेकर के, हाईवेज निर्माण को लेकर के और जल जीवन मिशन को लेकर के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट के एक दिन पहले पुनीत जी बात कहते हैं, ठीक बात है यशपाल जी, लेकिन अब ये बात मैं आपको टोक कर कहता हूं कि उन्होंने, अजय जी ने बाकी सारे पॉइंट्स ठीक है अपनी जगह, पॉलिटिकली उनको भी अपना भूमिका निभानी है, पर एक बात आप बताइए, एमएसपी को लेकर उन्होंने एक बात की, हमने जितने रिफॉर्म्स किए जरूरी है, कपास वाला, दलहन वाला या किसान क्रेडिट कार्ड हम सबका वेलकम करते हैं, लेकिन एमएसपी को लेकर क्या इस बजट में कुछ मिसिंग है, जैसा अजय जी का भी आरोप है, विपक्ष इसको उठाएगा? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, एमएसपी को लेकर के लगातार वृद्धि कर रही है, चाहे वो दलहन का हो, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे चने का हो, चाहे मूंग का हो, चाहे उड़द का हो, क्षेत्रीय स्टेट में भी, राज्यों में भी। और अब ये क्यों भूलते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ एमएसपी के साथ साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि देते हैं, मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी देते थे, वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी देते हैं, ये किसान सम्मान निधि कांग्रेस की सरकारों में क्यों नहीं मिलती थी? ये किसान क्रेडिट कार्ड कांग्रेस की सरकारों में क्यों नहीं मिलता था? क्यों ऊंट के मुंह में जीरे की तरह कांग्रेस की सरकारों के समय में? ठीक है अजय जी जवाब देंगे इस बात का, वो सारी मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। अजय जी बात का जवाब दे दीजिए, पॉलिटिकल बात आपने की, उन्होंने भी आपको उत्तर दिया। कांग्रेस की ही मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जिसने इस देश के किसानों की मनोदशा को समझा, और जब किसान आत्महत्या कर रहा था तो 65,000 करोड़ रुपए का उनका ऋण माफ करने का काम किया था। कांग्रेस की ही वो सरकार थी जिसने किसानों की आय बढ़े इस दिशा में काम किया, स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया। उसकी रिपोर्ट को लागू करने का काम अगर केंद्र सरकार का है तो क्यों नहीं कर रही है? इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनी तो हमने किसानों को जो है 2400 रुपए देने का वादा किया था, जो आज 3100 रुपए में इनको हमारे बीच में आकर के खेलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हम जब किसानों के जेब में पैसा डालने का काम करते थे तो उसमें रोड़ा अटकाने का काम करती थी, और इन्होंने हमारी देखा देखी, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में उस चीज को शामिल किया और कहा कि 3100 रुपया धान बेचने के समय नगद आपको उसी समय सोसाइटी के कार्यालय में मिलेगा। लेकिन आज किसान इनकी बातों पर भरोसा करके जिस तरीके से भटक रहा है, वो उसको पैसा नहीं मिल रहा है। आज वही स्थिति सब देश के बाकी राज्यों में भी है। जहां चुनाव आता है पुनीत जी, वहां इनका जो स्लैब होता है वो दूसरा हो जाता है, वहां के लोगों को देखने का नजरिया दूसरा हो जाता है। जिस तरीके से आज बिहार पर ये प्यार लुटा रहे हैं, वैसा ही प्यार कभी इन्होंने छत्तीसगढ़ पर भी लुटाया था। लेकिन जैसे ही चुनाव हो गया, अगले चुनाव तक वेट करना पड़ेगा। क्या सिसोदिया साहब इसका उत्तर दे दें, फिर मैं बाकी केस पर जाऊं। बिहार पर 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, इस बात को आपने भी स्किप कर दिया, मैंने आपको गिनाई भी थी, आप चाहें तो मैं दोबारा बोल दूंगा। देखिए, बिहार को मखाना बोर्ड मिला, आईआईटी पटना विस्तार मिला, पश्चिम कोसी नहर परियोजना वित्तीय मदद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इसमें मदद, 3 एयरपोर्ट्स इसका ऐलान, ये सब का सब बिहार, क्योंकि चुनाव है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए पुनीत जी। पूरा देश एक समान हम देखते हैं, सम दृष्टिकोण हमारा होता है। और अगर हम बिहार की बात आप कर रहे हैं और अजय जी कर रहे हैं, तो ये क्यों बोल रहे हैं कि इस बजट में दुनिया भर का खिलौने का हब, खिलौने का ग्लोबल हेड भारत बनेगा? तो क्या भारत पूरे राष्ट्र को इसका सम्मान नहीं बढ़ेगा क्या? और अगर बिहार का विकास होगा तो क्या देश का विकास नहीं होगा? बिहार भी भारत का एक हिस्सा है, एक राज्य है, और वहां पर अगर आवश्यकता है, जरूरत है, और उस राज्य इसको डिजर्व करता है, या उस राज्य में इसकी आवश्यकता है, उसको पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। और देखिए पुनीत जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। बी अनंत नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने कल ही कहा था आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बाद कि देश दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश यदि कोई बन रहा है तो भारत बन रहा है। अब एक इतने बड़े व्यक्ति का स्टेटमेंट अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो ये काम कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। कांग्रेस तो हमारे साथ शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैं थोड़ा उनका रुख करूंगा। सत्यप्रकाश शर्मा जी, अब जरा बाकी के पॉइंट्स पर आते हैं। और चलिए, कृषि का सेक्टर हमने देखा, तो कृषि में आपको नहीं लगता कि अब की बार जो वित्त मंत्री जी हैं, मुझे लगता है या शायद आपको भी इसमें नजर आए कि उनको कुछ टास्क मिले थे, बिहार वाला टास्क जिसको हमने पकड़ा, इस पर हमने बातचीत की। कृषि में भी आप देखिए, जैसे